Recording is started now. Okay, so yeah, sorry. Good afternoon, everyone. We welcome you all to today's webinar conducted by onlinetaxupdate.com. Onlinetaxupdate.com is a website which shares recent update in GST, GST Council meeting recommendations, important site links, budget updates, GST in media, and articles on important topics. It also has a note section where GST law is presented in a simple manner in PPT format, where the taxpayers can learn in a GST in a simple way. It also has a section note and judgment analysis under the title Logics. Online Tax Update also share newsletter on a very nominal fees. You can subscribe to that. Today's webinar is about on the topic how to furnish details of ITC in table 4 of GSTR 3B as per circular 170. And faculty is Mr. Aashish Miglani ji. Welcome Aashish Miglani ji. Ashish Miglani, brief profile have to say about him. He's a co-author of book on GST. His journey is one of continuous academic excellence and a relentless pursuit of expertise in the complex world of taxation. He holds the distinction of being the first certified GST practitioner from MSME in Saharanpur. His attendance at numerous GST seminars have garnered him certificates attesting him to his active participation and commitment to staying at the forefront of development in the field. Professionally, Ashish ji is a dynamic force. He is the thriving driving force behind GST Solution, a collective of tax professionals and advocates. Additionally, he serves as a GST advisor for the Chamber of Industries and Services, an association with over 400 members, as well as Saharanpur Hosieri Manufacturers Association, which represents more than 300 members. With over 7 years of experience in indirect taxation, Ashish's journey is a testament to his commitment to simplification complex tax matters. Without taking much time, let us start the session. After the end of the session, we can have a question answer session. Now, I would like to request Ashish ji to take over the session. Over to you, Ashish ji. Thank you, Ganesh sir, for this wonderful introduction. Hello, everyone. Before we delve into today's topic, I would like to take a moment to express my gratitude. It's a pleasure to be here, and none of this would be possible without the hard work of and dedication of a exceptional Ganesh sir. I, I also want to extend my thanks for the invitation to be a part of this platform. It's an honor to share insights and ideas such a distinguished group of participants. Now, let's start the webinar. Like Ganesh sir said, that we will be taking a question and answer at the end. If you have any questions in between, please note it down and we will take after the presentation. So let's get started with the webinar. Today's topic is on Circular 170. But before taking further to the topic, I would like to explain you certain important sections related to the topic, which is section 16. Section 16 has 6 conditions. Firstly is that you should have the tax invoice with you. आपके पास tax invoice होना mandatory है ITC claim करने के लिए. Second is कि आपका ITC GSTR 2B में reflect होना चाहिए. GSTR 2B में कैसे reflect होगा जब आपका supplier जो है अपनी GSTR 1 फाइल करेगा. Your invoice should be reflected in your GSTR 2B. How will it will be reflected that the supplier should file his GSTR 1. Third is that you should have received the goods and services. And the newly inserted clause is that the ITC should be communicated and should be according to section 38. ये जो है newly inserted जो बजट में हुआ था last year. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लॉज है सेक्शन 16 का कि आपका जो
टैक्स है वो सप्लायर ने पे कर दिया होना चाहिए। और लास्ट जो इसका क्लॉज है कि ही हैज फर्निश्ड हिज GSTR 9, ओ सॉरी GSTR 3B। अब ये ही कौन है, कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन नोज दैट ये ही का मतलब क्या है। ही कौन है कि जो GSTR 3B फाइल करेगा? बायर? एनीवन एल्स? किसी को नहीं लगता कि सप्लायर होगा? वेंडर्स? चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ठीक है, ही का मतलब है रिसिपिएंट। ये रिसिपिएंट ने अपनी GSTR 3B फाइल करी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो वो अपना ITC क्लेम करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्शन है, सेक्शन 16(4), जो बात करता है कि आपका जो किसी भी टाइम लिमिट को ITC क्लेम करने की जो है वो 30 नवंबर थी। जो पहले सितंबर की रिटर्न हुआ करती थी वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दी थी, या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर। कोई बता सकता है कि क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट कौन सी है? क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट कौन सी है? व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू अ क्रेडिट नोट विद इन द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड? क्या ये इनवॉइस से डेट से लिंक है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर ना? Write it in the chat box, viewers, participant. थर्टियथ सितंबर, 31 अक्टूबर। Let's get back. Last date to issue a credit note is 31st October, as rightly said by the participants. Some of the participants might be wrong. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अक्टूबर की रिटर्न कब जाती है? नवंबर में। और नवंबर आप कब जो रिटर्न है वो 11 नवंबर तक फाइल करेंगे अपनी GSTR 1। 30 नवंबर तो वो एक्सटेंडेड है, लेकिन लास्ट डेट तो आपकी 31 अक्टूबर ही होगी ना। Got it my point? So let's get start to the main topic. सर्कुलर 170 क्या कहता है, जो 6 जुलाई को आया था, कि मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इनएलिजिबल ब्लॉक क्रेडिट एंड रिवर्सल इन रिटर्न टेबल 4 ऑफ GSTR 3B। ये इसकी हेडिंग है। अब हम इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे GSTR 3B को? GSTR 3B में जितना आपका GSTR 2B में आपका डेटा आ रहा होगा वो आपका ऑटो पॉपुलेटेड होके GSTR 3B में आ जाएगा। ये ऑटो पॉपुलेटेड कब से स्टार्ट हुआ था? ये दिसंबर 2020 में ऑटो पॉपुलेटेड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपका जितना भी ITC आ रहा होगा, चाहे वो पहले क्या होता था कि हम कोई भी ITC एलिजिबल हो या इनएलिजिबल हो, हम उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते थे। लेकिन अब सर्कुलर 170 के बाद हम हर चीज की रिपोर्टिंग करेंगे। ये जो टेबल है, ये जो मैंने जो कॉलम मैंने रेड कर रखा है, ये टेबल 4A5 है। यहाँ पे आपका ITC नेट ऑफ करके आएगा। नेट ऑफ कैसे? कि आपका डेबिट तो ऐड होगा इसमें, और क्रेडिट नोट जो होगा वो लेस होके आएगा इसमें। अब ITC जो है दो तरह से रिवर्सल होगा यहाँ पे, एक टेबल 4B1 और एक टेबल 4B2। 4B1 क्या कहता है कि आपका कोई भी रिवर्सल ITC होगा वो परमानेंट होगा। परमानेंट कैसे? कि कोई रूल 38 में हो, जैसे कि कोई बैंकिंग कंपनी का आपने कोई रिवर्सल कर रहा है, 42 का हो जिसका इनपुट है इनपुट सर्विसेज का हो, 43 को कैपिटल गुड्स का हो, या कोई 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट हो, उसकी रिपोर्टिंग आप टेबल 4B1 में करेंगे। 4B1 हम अभी जो है पिक्चराइजेशन के मामले जो है से देखेंगे।
और जो टेम्परेरी का होगा, द आईटीसी विच इज टेम्परेरी नेचर, वो हम 4B2 में जो है रिवर्स करेंगे। या कुछ जैसे रूल 37 बोलता है कि आपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करी विद इन 130 डेज, या आपके पास गुड्स नहीं रिसीव हुए, या आपके सप्लायर ने कोई उसका आईटी जो है टैक्स नहीं पे किया, ये टेबल 4B1 है ऊपर, और ये अदर्स में टेबल 4B2 है। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल योर सप्लायर हैज सेंड यू गुड्स ऑन 31 जनवरी, एंड योर इनवॉइस इज ऑल्सो फॉर द सेम डेट ओनली 31 जनवरी, एंड आपका जो आईटीसी आएगा जीएसटीआर 2B में वो भी जनवरी के मंथ में आएगा। तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, आप उसको कैसे ये करेंगे? पहले आपका आईटीसी जो 2B में आ रहा होगा वो आपको एज इट इज टेबल 4A5 में आएगा। आप उसको पहले टेबल 4B2 में रिवर्स करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ जब आपके पास गुड्स रिसीव, जैसे फेब्रवरी में फॉर एग्जांपल आपके पास 5 फेब को आपको गुड्स रिसीव हुए, तो आप जो उस फेब्रवरी की मंथ जब रिटर्न जो होगी, जो मार्च में जाएगी, आप उसको टेबल 4A5 में दोबारा क्लेम करेंगे, और 4D1 में भी दोबारा दिखाएंगे। 4D1 जो है ये है जो हमने हमने हाईलाइट कर रखा है। ये 4B2 में आपने नीचे रिवर्स किया, 4A5 से जो आपका GST 2B से आ रहा है, उसका 4B2 में आपने रिवर्स किया, टेम्परेरी रिवर्सल जो है। उसके बाद आप 4A5 में आप दोबारा जो इसको जो क्लेम करेंगे, और 4D1 में जो आईटीसी रिवर्स इन टेबल 4B2 इन द अर्लियर टैक्स पीरियड, इसमें आप यहाँ पे दोबारा दिखाएंगे। यानी कि अब नेट आईटीसी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, 4A माइनस 4B प्लस, या जो रिवर्सल का जो दोनों का होगा वो 4A में आपका नेट आईसीटी जो नेट आईटीसी जो 4C में आ जाएगा। अब ऐसा कोई इनवॉइस जो आपको बिलोंग ही नहीं करता, यानी किसी भी अननोन सप्लायर ने आपके आपके GST 2B में आपके पास इनवॉइस आ गया है, आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? अब एज पर सर्कुलर आपको सारा आईटीसी लेना है, वो टेबल 4A5 में आएगा ही आएगा। तो आप उसको कैसे करेंगे? पहले आप उसको क्लेम करेंगे टेबल 4A5 में ही, सेकंड उसको टेबल 4B2 में रिवर्सल करेंगे। आपका नहीं है टेम्परेरी रिवर्सल, इसलिए कह रहा हूँ, वो अभी आगे फर्दर स्टेप्स में बताएंगे। थर्ड उसको थर्ड if in near future your supplier issues a credit note, then you will claim in under again under 4A5, then you will reverse in 4B1, that is permanent reversal, and you also show in 4D1। इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा, बट आपका पोर्टल उस मंथ का रेड हो जाएगा, तो आपको उसको इग्नोर करना है, यू नीड टू इग्नोर दिस। और उसके बाद आपने रिकंसिलेशन प्रिपेयर करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर का डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है तो आपके पास पूरा रिप्लाई जो है रेडी हो। नाउ हाउ टू रिपोर्ट आईटीसी व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू सेक्शन 16(4)। सेक्शन 16(4) यानी जो टाइम लिमिट की बात करता है, 30th November या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो आप 4D2 में आप रिपोर्ट करेंगे। या प्लेस ऑफ सप्लाई का भी कोई, फॉर एग्जांपल आपका जो है गुड्स सप्लायर ने कहीं और भेजना था, जैसे आपका होटल का आईटीसी होता है, किसी और स्टेट में आप गए और आपको जो वो C और S चार्ज करेगा, लेकिन आप दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपको IGST तो चार्ज नहीं करेगा। तो ऐसे आईटीसी को आप वो 4D2 में रिपोर्ट करेंगे। 4D जो है ये है जो हमने हाईलाइट कर रखा है, इलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4). दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? Thank you, Ashish ji. You have elaborated the परेश, table for. Yeah, so we have this. Amar ji has raised a query. Amar ji, you can ask your query. अमर जी, यू कैन स्पीक if you have any query. You can unmute yourself. Are you able to unmute yourself? If you are unable to unmute, you can write your question in the chat box also. Participant can post their query in the chat box also.
Mr. Lalan also has raised his hands. Okay. हेलो हेलो। Yes. Yes, बोलिए सर. yes, हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। good evening, sir. बहुत अच्छा लगा सर आपने ये दिए। तो इसमें एक क्वेश्चन मेरा है सर, दो क्वेश्चन है। पहला तो किसी पार्टी ने रॉन्गली बिल 2B में शो किया, हमारा बिल नहीं है। या ऐसा रहता है, कभी कभी देखा हूँ एक पार्टी ने डबल रॉन्गली बिल शो कर दिया, एक बिल को दो बार दिखा दिया। उस केस में हमको अपने 3B फाइल करने समय क्या करना चाहिए? सर पहले क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ कि आपका आईटीसी जो मतलब इनवॉइस आपका नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप करेंगे कि जो जैसे मैंने बताया कि आप पहले उसको 4A5 में एज इट इज क्लेम कर लेंगे सेम मंथ में, जब आपका वो ओके जैसे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद ओके। आप उसको टेबल 4B2 जो टेम्परेरी रिवर्सल है उसमें आप उसको रिवर्स करेंगे, तो उस मंथ का आपका इफेक्ट जीरो हो गया। अब नहीं, again, इन again, फ्यूचर आपका सब फिर नहीं, फिर से रिपीट करिए सर, क्या बोले? ओके, आपका आईटीसी जो पर्टिकुलर मंथ में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जीएसटीआर 2B में, वो जीएसटीआर 3B में आ जाएगा। मान ली फॉर आपको हंड्रेड एज पर रुपीज एज पर फॉर एग्जाम्पल जैसे हंड्रेड। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का आईटीसी है, वो आपका जीएसटीआर 3B में आ जाएगा टेबल 4A5 में। बराबर। ठीक है, आपने उसको क्लेम करना है क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्यों? वरना आपका जो कंप्लायंस है एज पर सर्कुलर 170 वो गलत हो जाएगा अगर आप उसको नहीं लेंगे आईटीसी को। ओके। तो आप उसको टेबल 4B2 यानी टेम्परेरी रिवर्सल, टेम्परेरी रिवर्स करेंगे उसको आप। ठीक है, टेम्पररी रिवर्स। हाँ जी 4B2। और 4B2 में करेक्ट। हाँ जी। अब नेक्स्ट मंथ में अगर इन फ्यूचर कभी भी किसी मंथ में भी आपका जो सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू करता है अगर, हाँ क्योंकि आपका इफेक्ट तो जीरो हो चुका है, आपने उसका आईटीसी नहीं लिया, उसको आपने रिवर्स कर दिया है। हाँ। बट इन फ्यूचर आपका क्रेडिट, अगर वो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है या नहीं भी करता है, पहले हम लेते हैं कि वो करता है। दो सिनेरियो है, पहले हम लेते हैं कि वो करता है क्रेडिट नोट इशू। हाँ। जब क्रेडिट नोट इशू करेगा तो नेक्स्ट मंथ में आप उसका 4A5 में दोबारा क्लेम करेंगे, फिर उसको 4B1 में यानी परमानेंट रिवर्सल में उसको दोबारा दिखाएंगे, और साथ ही साथ आप 4D1 में भी नहीं, उसको रिपोर्ट करेंगे। नहीं, फिर से इसका क्या करना, फिर बोलो सर, रिपीट अगेन। सर हाँ, आपका 100 रुपीज का जो क्रेडिट है, आपने फर्स्ट मंथ का तो पार्ट क्लियर हो गया सर आपका। अब करेक्ट नेक्स्ट करेक्ट, मंथ वो में, क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे? जब सप्लायर ने आपको जो है क्रेडिट नोट इशू किया, तो आप क्या करेंगे? उसको टेबल 4A5 में क्लेम करेंगे 100 रुपीज का आईटीसी, उसको इंक्रीज हाँ करेंगे आप, अपनी आईटीसी को 100 रुपीज से इंक्रीज करेंगे, फिर उसको 100 रुपीज को बराबर। टेबल 4B1 में दिखाएंगे जो परमानेंट रिवर्सल है। हाँ। ठीक है सर। ओके ओके। उसके बाद आप उसको 4D1 जो थर्ड थर्ड कॉलम है, ये सेकेंड मंथ में आप जो है करेंगे। फिर आप उसको सेकेंड हेलो। मंथ में जो है आप उसको, हेलो, हाँ सर। सेकेंड मंथ में आप उसको 4D1 में भी दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, इतना इतना ये से जाना पड़ेगा। और हाँ, सर ये इसमें सेकेंड मेरा मंथ ये का, नहीं हो सकता? हाँ हाँ सर। तो ये आपका सेकेंड मंथ का होगा जब आपका सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है। इन केस करेक्ट। अब हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपका सप्लायर जो है क्रेडिट नोट इशू नहीं करता है, तो आपने कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपका ऑलरेडी रिवर्सल है, तो इफेक्ट आपका जीरो है। अच्छा। ठीक है सर। ओके। इसका मैं एक ये नहीं सर, मेरा नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊं, मैं वहां पर ऐसे नहीं नहीं सर, आप उसका। ऐसा नहीं कर सकते सर, आप फिर आप नहीं दिखाएं, आपको हाँ, दिखाना ही वो पड़ेगा रॉन्गली क्योंकि किसी पार्टी ने हमारे रॉन्गली GST 3 नंबर पर उसने शो कर दिया सर, जी, बट हमको आप उसको पता नहीं। बट आप उसको सेम मंथ में रिवर्स भी तो कर रहे हैं सर, टेम्परेरी रिवर्सल में वो क्लेम करके। ITC लेजर, रिवर्सल ITC लेजर में चला जाता है सर, आजकल पोर्टल पर भी वो आएगा, 2B में दिखा तो मैं वहां पर चला जाता है। बिल्कुल, जो सितंबर 2023 से जो एक्टिव हुआ है ये आपका हाँ रिक्लेम वाला क्रेडिट लेजर,
तो हाँ आपका उसमें चला जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है, वो उसमें अच्छा जाएगा, यानी रिक्लेम करके आप उसको रिक्लेम तो कर सकते हैं ना सर। हाँ हाँ तो रिक्लेम तब कब करेंगे, जब आपका सप्लायर को आपको क्रेडिट नोट इशू कर देगा, वो नेक्स्ट मंथ बराबर आप करेंगे, नेक्स्ट मंथ रिक्लेम करेंगे हाँ उसको, तो वो दोबारा 4A5 में जाएगा। फिर फोर बी बराबर वन में 4B1 में आप उसको जो है रिवर्सल करेंगे, परमानेंट रिवर्सल, ओके, बराबर और उसको 4D1 में भी दिखाएंगे। 3 स्टेप होंगे सर सेकंड मंथ में। अच्छा सेकेंड इसमें 3 स्टेप से जाना, हाँ जी, दिस इज द करेक्ट वे। यस सर। ओके, कुछ रेक्टिफिकेशन हुआ तो सर बिल का रेक्टिफिकेशन कर दिया तो सेम वे लाइक दिस। सर कुछ रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन हुआ तो सेम वे करेंगे, आपकी उसको जो है रेक्टिफिकेशन तो क्रेडिट नोट से ही तो करेंगे ना सर। नहीं नहीं, कभी कभी क्या 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 करता पार्टी, बिल शो कर दिया, बोलता ये नहीं है, नेक्स्ट पर्सन वो बिल को रेक्टिफाई करता है, ऐसा भी हुआ। तो उनको बोलो कि बेटर है कि उसको बिल को वो जो है GSTR 1 में रेक्टिफाई करते हैं, तो उनको बोला करो कि अगर हाँ कोई डिफरेंस होता तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करें नेक्स्ट टाइम से। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ना सर, हम नहीं, हाँ, हम भी नहीं कर सकते, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है सर ऐसा। तो फिर आपको फिर डिफरेंस अमाउंट का Actually, जो या तो आपका डिफरेंस अमाउंट का ITC जो है फिर उसको सेम मंथ में आपको, जिस मंथ उन्होंने रेक्टिफाई किया है, तो सेम हाँ मंथ में आपको ITC या तो रिवर्स करना पड़ेगा या क्लेम करना पड़ेगा। हाँ इधर बोथ द वेज। अच्छा ओके, ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। एनीथिंग। आशीष जी, यस सर। या सॉरी आई वाज अनएबल टू अनम्यूट लास्ट टाइम। तो नो इशू। मेरा सेम क्वेरीज है बट इन डिफरेंट माने पर्सपेक्टिव। एक्चुअली अपना क्या है, एज गणेशन जी ऑल्सो नोज, वी हैव टू डिवीजन, वन इज टैक्सेबल एंड अदर इज नॉन टैक्सेबल फॉर सेम GST। अब क्या होता है, सपोज जो नॉन टैक्सेबल डिवीजन का है वो रिवर्स कर देते हैं हम लोग ITC परमानेंटली, ओके, और जो टैक्सेबल है उसको हम लोग क्लेम करते हैं बाय रिकन्सिलेशन 2B के साथ। बट समटाइम व्हाट हैपन्स कि कुछ ऐसा ITC है दैट इज अनआइडेंटिफाइबल, वो मतलब टैक्सेबल का है या नॉन टैक्सेबल है तब पता नहीं चलता है, तो उसको रिवर्सल कैसे करेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट? सर आपको पहले टेम्परेरी करना पड़ेगा क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। राइट। पहले आप उसको टेम्परेरी ही रिवर्सल करेंगे। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए नेक्स्ट मंथ में या इन पर्टिकुलर मंथ्स में, कभी भी जो आइडेंटिफाई हो जाए, फिर आपका सेम प्रोसीजर रहेगा जो 3 स्टेप्स में मैंने अभी ललन जी को बताया, कि 4A5 में आप उसको क्लेम करेंगे, फिर 4B1 में उसको परमानेंट रिवर्सल करेंगे, फिर 4D1 में आप उसको सेम मंथ, ये तीनों स्टेप जो सेम मंथ के हैं। सपोज अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ? तो 4B2 में तो आपका रिवर्सल है ही सर। नहीं बट वो परमानेंट नहीं है ना, टेम्परेरी है, वो इसमें दिखेगा अपना नो इश्यू सर, आपका ITC रिक्लेम में। रिवर्सल तो है ना सर आपका। आपने हाँ ITC जो रिवर्सल है। आइडेंटिफेबल नहीं है, बट आपने हाँ अपना कंप्लायंस पूरा किया कि वो, राइट। मुझे नहीं पता था तो मैंने जो है उसको रिवर्स तो कर दिया है। हम्म। ये गवर्नमेंट ने दो जो है पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है, इसके पीछे रीजन है। 4B जो 1 है, उसका जो IGST का जो पार्ट है वो सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होता है, इसलिए उन्होंने राइट। परमानेंट ये दो जगह उन्होंने जो है टेबल्स बनाए, 4B1 और 4B2। ओके, तो उनका इट ये, डजेंट मैटर, हाँ इट डजेंट मैटर इफ आई रिवर्स इट इन टेम्परेरी, मतलब अगर वो नहीं क्लेम किया, अगर वो टेम्परेरी में रह गया तो कोई इश्यूज है? कोई इशू नहीं है। ओके। मोटिव कि आपका जो रिवर्सल होना चाहिए। एंड जब अगर नेक्स्ट मंथ में और आफ्टर दैट मंथ में अगर आइडेंटिफाई हुआ देन आई कैन रिक्लेम 3 स्टेप्स में। इट। या ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। ये क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, टू बी फिगर आफ्टर मैचिंग विद बुक्स ओनली शोन इन 4A5 और डायरेक्ट टोटल टू बी डोंट क्लैरिफाई। सर स्पंदन जी,
आपको जो है अपना GST 2B में जितना आ रहा है डाटा वो एज इट इज 4A5 में क्लेम करना है, डायरेक्ट टोटल आपने नहीं करना है। अगर आपका क्रेडिट नोट कोई है तो वो आपका जो है नेट ऑफ होके आएगा। बंदन जी, अगर कोई आपका कोई और आपका इससे रिलेटेड अगर है क्वेरी इसी से रिलेटेड तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें, या फिर अपना हैंड रेस करके आप अनम्यूट भी करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। Hello. हेलो। Hello, sir. This is Rangaru speaking, sir. This is यस सर। actually my query is actually at the time of reconciliation of 2B, the figure which is given in 2B, that figure directly shown in 4A5, or whatever the matching with books only to be shown in 4A5. नो नो सर, To reversal in 2B, 4B of 1 or 4B of 2, temporary or permanent. It should be matched with books or direct 2B figure would be shown. ओके, योर क्वेश्चन ओवर सर, लेट कैन आई स्पीक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can speak, sir. Sir, from January 2022, 1st of January 2022, your ITC should match with GSTR 2B as newly inserted section, that is section 16 to AA, clause AA, which says that your ITC, which which says that your ITC should match with GSTR 2B from January 2022. So you need to take your ITC as per GSTR 2B, not as per your uh, books. You need to prepare a reconciliation for the particular for separate months so that your books should have all the ITC matching with GSTR 2B. Nandanand, sir. Sir, where are you? Hope I've cleared your query. Rangarao can you hear us? Hope your query is resolved. Hello, it is Shantanu from. Hello. Yes, sir, Shantanu, sir. Yeah, I am getting the notice that you for the same section you should reverse this one ITC. What is this more than 2B from 1718 to right now? What is the extra amount is there in 2B? You have to reverse right now. I'm getting the notice like that. It is should do the this thing. Should I reverse? Take the input then the reverse from 17 No, 18 onward. no, sir. Sir, in 1718, there was no GSTR 2B. GSTR 2B came in around 2020, I guess, August 2020. So in 1718, there was no GSTR 2A, no GSTR 2B. So you need to prepare a reconciliation that how much you have invoices and for how much you have claimed the ITC. And if your some of the suppliers ITC is not reflecting in your GSTR 2A, then you need to, as per circular 183, if I'm not wrong, as per circular 183, you need to take the what you call on a letterhead that the supplier has filed the return and paid the taxes along it, and by mistake it is not reflecting. By mistake, they have shown the ITC in instead of B2B, they are shown into B2C. This is the format as per circular 183. No, actually The in GST 9 we are showing that we are claiming less from 2B. In 3B
suppose in 2B there is a around 10 rupees, we have claimed only 5 rupees. 5 rupees is not taxable this thing. So in GSTR 9 it is there. We are not claiming that much of amount. Right now, assessing officer telling that amount from 17, 18 to now onward, you just take the input and then reverse the amount. There's no loss for you, but for revenue purpose, we require that one. Should we do? No, no, sir. The officer is saying wrong that you cannot claim that ITC because as per section 16.4 in the 1718, the last date was to claim till 31st March 2019, if I'm not wrong, because the section 16.4 proviso says that you can claim your ITC till 31st March 2019 for 1718 period. No, sir, I'm not claiming. It is actually claiming and reversing that same amount. Sir, It my point is only you cannot claim that ITC for 1718 okay. period. I'm saying Hmm. that only that you cannot claim now. The officer saying is incorrect. Okay. Yes, sir. And what was your query, sir? That your ITC was showing less, or you have reversed the ITC, or your ITC was shown in the lapse No, no. column. In that one, what happened? In 2B there is always our business have a tax-free this thing output. So we have always claiming less amount of ITC. In 2B always it is more amount, and 3B it is the less amount. So Okay. I got the notice that for revenue loss for government, so you just take the input and reverse it. So we government will get the some revenue. No, This no, is the sir. main. No, no. Officer is wrong, sir. You cannot claim now. And secondly, that your ITC was showing more. So you need to reverse as per rule 42 and 43. ITC in 2B, ITC in 2B is more, not in 3B. ITC in 2B is more. I got your point, sir. You Yes, sir. have taken less amount in 3B Yeah. because of your exempted goods. Yeah, yes, sir. So as per rule 42 and 43, which talks about exempted goods only, you need to reverse some portion of ITC. The calculation is given in rule 43 and 42 as well. So you need to reverse that ITC at that point in 1718 only. Have you reversed that ITC or you have not taken that ITC? I've not taken only. Okay. So nothing can be done, and you can just say that I have not simply just reply to the department that as per section 16.4 proviso that the time limit to claim ITC for the particular 1718 period is not now, and we cannot claim that ITC. And since uh, you need to take the ITC, you have exempted supply, and as per rule 42 and 43, we need to reverse that ITC. And by mistake, we have not reversed it, and so uh, we have not claimed it. Neither we have not claimed it, nor we have reversed it. So there is no revenue loss to the department. Shantuji, hope I'm clear. No, it is only for not revenue loss. They are telling about the state government to got the revenue for reversing this one. That only that part. It is not a revenue loss. It is not a like a any demand notice. It is just told But me if कि you just but if you claim that ITC for the pertaining to 1718, na, then in hmm. future you will might get notice for this period that you have claimed more ITC uh, as per GST 2B. No, okay. I'm got the notice na from I have the written this thing is there na कि you just claim and reverse this one. I have the in written from government only na. So I can if it is there. So if I only show the ITC and reverse it, so for me it is no loss. For government maybe gain some revenue from state government. You can do that, but
I am not going to give you this advice that you should claim. It's totally Okay. your call in that case. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Vandananji. Thank you, Okay, Bharatji. so any more questions from the participant can send in the chat or they can call. Yeah, you can contact me on my mail ID as well, and I have my YouTube channel and my Insta ID is also there. You can connect me with there at this also. Okay, I think if there is no query as of now, but No, anything is. Paresh sir has Acha, some he query. has raised one query. How to show ITC of RCM on freight for exempt items, which is ineligible as on exempt items. So you cannot claim that ITC, sir. So you need to pay the RCM part in table 3.1.d in GSTR 3B, and you need to reverse that ITC in uh, table 4B1 only. Permanent reversal. Yes, sir. So you need to pay the RCM in table 3.1.d, and you need to reverse the ITC in table 4. First, yes, since it is not eligible as an exempted item, it is permanent reversal. Right. Yes, sir. I hope Paresh ji has got the answer. Yes, sir. If you still have any Okay, query he acknowledged. coming in Yes. your mind, you can mail to us. Either, yeah, either to Ganesh sir or to me directly only, and we will be sharing this PPT to. I'll be sharing this PPT to Ganesh sir only, and he will be providing to all of you. Okay, I think we can conclude. Thank you, Ashish ji, for taking Sure, sir. your valuable time and for giving such a wonderful session on this topic, how to show the detail of ITC in Table 4 of GSTR 3B. I hope all attendees have enjoyed the session as well. Thank you, Ganesh sir. If you have any query, you can mail it to sir. The email ID of the sir is given in the PPT, which I'll be sharing with you. He will be answering the queries. Okay. So let us conclude. Thank you all the attendees. Thank you for your time as well. And we shall meet soon on the next webinar on an interesting topic in GST. Thank you everyone. Thanks, Ashish ji. Thank you, Ganesh sir, and thank you everyone for patience listening and raising your queries. Thank you for sharing knowledge. Thank you. Thanks.